Good morning, dear students. As you know that today is Thursday, and Thursday our maths class is there. So in the last class, some students are having doubt in the sixth question. They are having some doubts. So sixth question is too much easy. Just remember one thing only. If the question is saying about the negative integer, if the question is saying about the negative integer and the quantity of the integer, if the quantity is odd number, then the result is negative. Suppose what is the product of 7 negative integer? So I am saying about negative integer, but how much quantity is 7? 7 is odd, so always the result is negative. Suppose I am saying like this: what is the product of 16 negative integer? So negative integer and 16 is even. So even is there, then the result is positive. Just take care about only the quantity of the given numbers. Okay, how much he or she is telling. Okay, so first question I told about the 7 is odd, so result is negative. And second one, 16 is even, so result is positive. So this is the way. So now just see the next question, seventh one. Solve the following problems. In the seventh one there are 3 questions, so I wrote 2 here. You have to solve this problem. Just see, find the dividend which when divided by negative 25 gives the quotient 154. It means when we are see about the divide, this term is called dividend. Here is called quotient, and this is called divisor. Okay, and here is the remainder. So the question is not asking about the remainder, so remainder is not here. Just exclude the remainder. Choड़ दो उसको remainder को. Okay, the question is saying about quotient, divisor and dividend. You have to find the dividend. तो जब भी आपको dividend find करना है, then dividend is equal to product of divisor into quotient. Product of divisor into quotient. So the dividend is equal to divisor into quotient. So the dividend is divisor means negative 25 and quotient means 154. Just make the product of 154 and 25. 154 and 25. 5 4 that 20, carry 2, 5 5 25, 25 and 2 27, carry 2, 5 1 5 5 and 2 7, 2 4 8, 5 2 10, 1 2 1 2 and 1 3, 0 8 and 7 15, carry 1. So the answer is negative is there, negative 3850. Okay, so your dividend is negative 3850. Any doubt? So this is the way to solve this type of questions. Okay, so the next one, when 3500 is divided by a number x, then quotient is 125. Again same term is there. This is called dividend, divisor and quotient. The question is not telling about the remainder, so just leave the remainder. Okay, so in this question you have to given the quotient दिया हुआ है. This 3500 is divisor or dividend? Ashwin? Yes, very good. 3500 is dividend. In this question you are given the dividend and you have to find the division. When you have to find the division, then division equals to dividend divided by quotient. Division equals to, when you find the dividend, then dividend equals to division multiplied by quotient, and if you want to find the division, then the division equals to dividend divided by quotient. So the dividend means 3500 divided by negative 125. So just make the divide and you get your division. Division means x. X is your division. So put the value of x instead of divisor. Okay, so division की जगह पे हम क्या लिख देंगे x, because the divisor is x. Okay, so make the divide 3500 and 125. 125 बन जा 125 बन जा 250, 125
3 जा, इट मींस 3 टाइम जाएगा समथिंग कुछ, सॉरी 3 टाइम ज्यादा हो जाएगा, चेक करें। 5 3 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6 7 7, 375, इट मींस मोर देन 2 टाइम 250, 0 0 and 1000, now 4 टाइम 125, 4 जा 5 20, no, sorry 8 time. So the answer is negative symbol is there, so answer is negative 28. Your negative symbol is here, so we have to write the negative 28. Okay, so this is the way when you have to find the dividend. The dividend equals to divisor into quotient, and if you want to find divisor, so divisor equals to dividend divided by quotient. Okay, so divisor value is given x, so instead of division you write x, so x is a negative 28. Any doubt? So take the screenshot and write it on notebook. So I think you didn't see properly. So when you give the divide 3500 divided by negative 125, then the result is negative 28. So the value of x is negative 28. Okay. So now I think you can see. So right. So in this C1, what would be the quotient when 22572 is divided by negative 18? What will be the quotient when 22752 is divided by negative 18? So आपको सीधा ही quotient फाइंड करना है. So the quotient equals to divide by that division. Dividend है और ये क्या है, division है, directly you can do it. So quotient dividend 22572 divided by negative 18. So make the divide 22572 18 one time 18 22 minus 18 then 4 and 0 45 2 times 30 18 to the 36 15 minus 6 then 9 0 5 times 90 72 18 हो जाए 18 to the 36 4 times 72. So your quotient is negative 1254. The quotient is negative 1254 because here is negative 18. So this is your answer. Take the screenshot and write it on notebook. If you face any problem, then you can ask me. Okay. Okay. So next 8th question. Ramesh complete a game with 1500 points in first round. मतलब रमेश जो गेम खेला है फर्स्ट राउंड में उसको कितने पॉइंट मिलते हैं 1500. देन ही लॉस, मतलब उसको लॉस होता है 1200 पॉइंट्स इन सेकंड राउंड. सेकंड राउंड में उसको क्या हो जाता है लॉस. एंड देन कंप्लीट द थर्ड राउंड बाय स्कोरिंग 200 पॉइंट्स. थर्ड राउंड में वापस 200 पॉइंट स्कोर होते हैं. तो व्हाट इज द फाइनल स्कोर? तो फर्स्ट राउंड स्कोरिंग first round, as you know that he scored in first round 1500 profit point. Score in second round 1200 point loss. Just see, loss is there. So loss means you have to make subtract both of this. Now he has 300 points only. So score in third round 200 point. Loss not gain है. Only gain are there, मतलब इसको मिलते हैं. सेकेंड राउंड में केवल इसको लॉस होता है, बाकी फर्स्ट और थर्ड में ये गेन करता है. ठीक है. देन गेन मींस ऐड 005. फाइनल स्कोर इज
फाइनल स्कोर is 500 points. Okay, so this is the way. Take the screenshot and write it on notebook. Okay, so the next question: an elevator descends into a mine shaft at the rate of 13 meters per minute. If the descent starts from 20 meters above the ground level, how long it will take to reach -240 मीटर। अभी माइन एलिवेटर क्या होता है आपको पता है? माइंस के अंदर जो है एलिवेटर का मतलब होता है एक लिफ्ट टाइप में लगा हुआ होता है उपकरण, ठीक है। तो उससे क्या होता है वो अंदर जाता है, लोग उस पर बैठते हैं, फिर वो अंदर उतरता है, तो उसको कहते हैं एलिवेटर, ठीक है। तो एलिवेटर की आपको टाइम 240 मीटर, या मान लिया कि यहाँ पे ये 240 मीटर अंदर जा रहा है, ठीक है, और ये 240 मीटर तक है, और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 20 मीटर अबव से, 20 मीटर अबव। ये सपोज लेट कर ले कि ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे ये जो है आपका ग्राउंड लेवल है, क्या है? ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल। इस यहाँ पे है एलिवेटर आपका 20 मीटर अबव, 20 मीटर अबव। The elevator is on 20 meter above the ground level, 20 meter above the ground level। इसको यहाँ से यहाँ तक आना है। It means we have to find the time. Speed already given. Speed of elevator is already given 13 meter per minute. We have to find out the time. So we know that time is equals to distance upon speed. So if we got the distance, then we will find out our time. अगर अपने को डिस्टेंस पता चल जाए तो अपना टाइम मिल जाएगा अपने को। तो ये 20 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है? 240 तक। तो यहाँ तक देखो, इससे ऊपर तो 20 है, इसके नीचे कितना है? यहाँ से यहाँ तक ये नीचे है 240, और इसके ऊपर ये कितना है? 20। तो टोटल डिस्टेंस जो है कितनी हो जाएगी अश्विन? वेरी गुड, 240 प्लस 20। सो टोटल डिस्टेंस 240 प्लस 20 एंड 260 मीटर। अब आप बोलोगे साहब नेगेटिव ये तो है, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी चीज की डिस्टेंस लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। लेंथ, एरिया, डिस्टेंस, पेरीमीटर ऑलवेज आर पॉजिटिव। ये सब क्या होता है? पॉजिटिव। सपोज मैं आपको वो इस बोर्ड की लेंथ यहाँ से यहाँ तक -10 है, ऐसा पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। सो डिस्टेंस, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, व्हाटएवर थिंग्स आर देयर, कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, ऑलवेज पॉजिटिव। सो नेगेटिव है, उस नेगेटिव को छोड़ दो, 240 और 20 मिलाकर कितना हो जाएगा? 260। सो योर टाइम इज इक्वल टू 260 अपॉन डिस्टेंस इज 13, सो आंसर इज 20 मिनट्स, व्हाटएवर 20 मिनट्स। सो इन 20 मिनट्स द एलिवेटर इज गो थ्रू -240 मीटर। ये एलिवेटर यहाँ से स्टार्ट होगा तो 20 मिनट में यहाँ तक एग्जैक्ट पहुंच जाएगा। ये ग्राउंड लेवल है, ये उसके अंदर है, ये उसके ऊपर 20 मीटर है। ओके, एड इट आउट। सो ड्रॉ द डायग्राम एंड राइट द क्वेश्चन लाइक दिस। One more time I will explain this question. The elevator is here 20 meter above from the ground level, and it want to go that 240 meter inside. ओके, जमीन के अंदर 240 मीटर जाना, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आपके हो जाएगी 240 प्लस 20 देन 260 होगी डिस्टेंस। स्पीड इज गिवन 13 मीटर पर मिनट, सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 260 अपॉन 13, 20 मिनट। ओके, so next question. A shopkeeper earn a profit of ₹5 by selling one notebook and incurs a loss of ₹1 by selling one old pen. In a particular day, the shopkeeper earned a profit of ₹185 and he sold 75 old pens. Then find the number of notebook he sold. मतलब एक शॉपकीपर है, वो जब नोटबुक सोल्ड करता है तो उसको ₹5 का प्रॉफिट होता है, ₹1 का लॉस होता है, साथ में पेन भी बेचता है, ठीक है। नोटबुक प्लस पेन दोनों टुगेदर, ₹5 प्रॉफिट होता है नोटबुक पर और ₹1 प्रॉफिट होता है किस पर? सॉरी, लॉस होता है पेन पर, ठीक है। तो वन डे उसको ₹185 का प्रॉफिट होता है टोटल, और इसके साथ में 75 ओल्ड पेन भी सेल कर देता है। तो द प्रॉफिट
rupees 185, and the cost of cost of 75 note pens. Sorry. Now you see profit is 185. He sold 75 old pens. 75 old पेन भी साथ में बेचता है और एक पेन बेच को क्या होता है, लॉस होता है. So again the profit for 75 old pen to 1, it means 70 rupees 75. So total profit 185 plus 75, so 200 and rupees 260 is your total profit. So now he sold cost of one pen. Profit for each notebook. Profit for each notebook is rupees 5. So the number of notebook is equals to number of notebook is equals to 260 by 5. So your answer is 52 notebooks. 52 notebooks. It means in this question the shopkeeper sell the notebook, then he got the profit of 5 rupees, and with the notebook he sell one pen, then 1 rupees loss. Okay, so first we will find out the total profit. Total profit means 185 is given for the 75 pen. 75 multiply 1, then 75 is also, so 185 plus 75, then total 260. So he sold notebook is 260 by 5. The answer is 52 notebook. Okay, any doubt? If you have any doubt, then after 10 minutes we will arrange a Google Meet meeting, so you can ask their doubts. But I think this is too much easy, so you can understand. Okay, so take the screenshot and write in a notebook.